judicial determination of a cause after taking into consideration the material on record, that is your reply, and after hearing the parties. So it should be principle of natural justice, reason and the speaking order. I'm running short of time. Reply to the notice and the no hearing are two different things. It should not be mixed together. Once you file the reply, the matter is not over. Either party can raise the inconsistency and the contrary pleas in the replies. Issues of taxability or rate of tax duty can be raised even if it is not raised. Principles of natural justice. Doctrine of bias is not to be used. Both the parties should hear each other's side. That is a must. So when we see whenever the service tax notice is received, whether first it is falling as a service. If yes, whether it is covered under the negative list of services. If not, then see whether the exemption threshold was permissible. Disclosure in ITR 26 AS. Business codes used. Many notices are generated because of the use of business codes also. These are the common terms which are used in all the show cause notices. Conditions, procedures, contraventions observed appear that mismatch, blah, blah, blah. Fully aware about the law compliances, fraud, willful suppression of facts, unnoticed, undetected loss of government revenue, responsibility to pay appropriate tax under the self-assessment regime, demands quantified with the specified rate of levy, intention to evade taxes bearing government revenue. Why tax interest penalty should not be demanded for all of the, I have used the word color red because it is a danger. It should be studied under the lens which I have already covered. All documentation should be prepared, kept ready before drafting such reply tables, reconciliation proofs. SEN issues to be summarized in a tabular pointers. Typically, we prefer to reproduce the SEN matters in the reply itself. Every point should be covered. After each response that you file, your conclusion should be provided. Okay, what is your view, whether you are correct or they are correct? Main aspects to be covered in order sheets at the time of personal hearing. Reply should be prepared as if we are preparing a paper book for the litigation at higher forums, which can be appeal, tribunal, high court, or Supreme Court. If documents are lost by the department, then copies can be filed again, giving reference of previous filings. And if the demands are not payable, please state the facts very clearly and explicitly. Communication should be simple, precise, factual, descriptive, and constructive. Never use any communication which is putting allegations on the authorities. Take care of that. It should be properly worded, and that is where the art of communication will come into the play. Never use the standardized replies. Many people feel it is standardized replies. Typically, maintain 3 copies of show cause notice, one for you, one for the government authority, one for the client. While filing replies, always record the process of serving of notices, especially if they are not served physically to the taxpayer in the form of a tabulations can be prepared and references can be given in the previous communications for the documentations. Always start your reply by starting with the words without prejudice. It's a standard legal acronym which is used in every legal reply. Always demand the personal hearing.
Avoid seeking adjournment unless the same is absolutely necessary. I have covered this part. But when you are going for a hearing, always keep the judicial material in hand. If required, then you can file it on the spot, or you can say, this is what I would like to rely upon, which I will file with a covering letter at a second stage. Now, these are the couple of judicial references which I have covered. Issue of show cause notice is a condition precedent to a demand. If show cause not issued, then it is not valid. Various judgments are there. Mere letter is not enough, or communication is also not enough. It has to be in writing. Must contain all essential details. It should not be based on assumptions and presumptions. This can be, if a wrong rule is quoted or a wrong section is quoted, it is still treated as a valid notice. If corrigendum or addendum is issued to the show cause notice, but which changes the character of our original show cause notice, then it is treated as a fresh notice, and the time limits begin from that. But it is only additional information which does not change the character of our original show cause notice, then original show cause notice time limits apply. These are the standard limitations period. The most important thing, if there is a case of a fraud, then department has to prove it first, and then the taxpayer has to refute it. Now, these are the couple of references in the key. Whatever the information that is declared in the IT returns cannot be the basis of opening up the matters. That service tax department is expected to go through the books and then take a call whether it is a genuine call or it's not a genuine call. Again, presumption or third party information. But if they examine the books of accounts and they find that there is an issue, then they can proceed further. If it is not an identified service, then that is invalid show cause notice. The most important is the person who has done the hearing of the matter, he has to pass the order. But if there is a transfer of officer, then the hearing restarts from the A. To reach the conclusion is a foundation on which department will proceed to adjudicate the matter by crystallizing the demand and effect the demand and recovery from the taxpayer. Prompt, precise, and accurate replies by the taxpayer through their advisor can act as a defense while defending the matter at all levels of litigation. Our experience says that the more elaborative and more accurate show cause reply helps at the future levels of litigations. So if you prepare show cause reply in the most researched and the methodological manner, then it will help all the stakeholders at all the stages. I've used these references. I always say surround yourself with the people who talk about vision and ideas, not people. I appreciate all of you for giving me an opportunity. Though time was very short, I've exceeded 15-20 minutes. Please pardon me for the same. Thank you.
सर आप म्यूट पे हैं दिलीप जी, आप म्यूट पे हैं सर. Okay. Thank you very much, Nitin Bhai, for coming to our rescue in the last moment and giving this absolutely good presentation. Really, I was not knowing that the ACN is required so much of attention, and we have to look into these matters. And with your kind permission, we'll share it with our members, sir. Thank you very much, Nitin Bhai. Thank you very much. Friends, we have a question in our mind regarding what is the future of our profession. Be positive and ask what is the profession of the future. That the question should come in our mind. And what are the opportunities? To have CAIP Pradeep Kabra and CAIP Vinita Maheshwari. Both are insolvency professionals and motivators. They will guide us about general overview in insolvency and bankruptcy court and opportunity for CA under IBC regime. Before they speak, I request CA Parag Javeri to introduce both the speakers. Parag. Hello, friends. Mr. Pradeep Kabra is an insolvency professional from IBBI, a fellow chartered accountant, diploma in IFRS and ISA done from ICAI, has done certification course on concurrent auditor from ICAI, completed DBM from Wellington Institute of Management and Research, and secured second position. He has co-authored a book on emerging topic, unlocking personal guarantee provisions under IBC for effective recovery for banks and financial institutions. Is non-executive director in financial institution, presently managing committee member of Surat branch of ICAI, partner of JLNUS and Company, which deals mainly in insolvency cases, project finance, and bank branch audit, director and competent insolvency professional private limited, presently a team member for Central Statutory Audit for IDBI Bank, presently member in Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, has served as co-committee member in various social organizations, has served as member in PR committee of WRC of ICI, has served as member of Career Counseling Task Force Surat Branch, has served as a member of CP Committee of Surat Branch, has delivered various lectures in CP conference on running topics like insolvency and bankruptcy, project finance, bank branch audits, IFRS convergence, etc. Has delivered motivational lectures at various platforms, including for students, life members is a life member of ISKCON. His core area of practice includes insolvency profession, revival and restructuring, and one-time settlement with banks, FIs, project finance. He is also engaged in sourcing investors for revival of sick industrial units. Friends, it would not be an understatement to say once I have introduced Mr. Pradeep Kabra, uh, the introduction for Vinita Maheshwari is also covered almost 95%. As can be seen, their qualification is almost same and their experience is also 95% same. With this, I invite both the speakers. Yeah, thank you, Parag ji. Thank you so much. Means our experience is also same, and let me tell you that we are husband wife. So, so, uh, so good evening, friends and colleagues. I feel honored and pleased to be here. I pay special thanks to dignitaries of Churchgate CP Study Circle, especially to CA Dilip ji for giving me this opportunity. And due to this COVID pandemic, we are meeting virtually. Otherwise, on the last year, same date, sir, same date, 25th of January, I was at Navi Mumbai CP Study Circle, and past president sir were also there, and we have taken 2 hour CP seminar on insolvency. तो सेम डेट, मतलब ये डेट मुझे लग रहा है बॉम्बे के लिए फिक्स करनी रहेगी सर. And I have completed my chartered accountancy from Mumbai only. I was at RVG hostel, and my articleship was at Casey Jain and Company. So with these words and with the permission of chair, I want to start this presentation.
Yes, please, sir. Yeah, thank you. Okay, so see, every time we talk about the opportunities, opportunities, opportunities. So the my first question to all my dear friends and colleagues, आप लोग चेक बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं. There is an option. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये, because I want to make this session very interactive. So my question is that are opportunities monopolized? क्या अपॉर्चुनिटी पे किसी एक का अधिकार है या किसी की मोनोपोली है? I request all participants to write yes or no in their chat box. Chat box option is there. No. Very good. So maximum person has given their views that no. So yes, yes, sir, right, that opportunities are not monopolized. Opportunity, because see, this nature is full of resources, and they are available for all seamlessly without any bias. So if one can do, anyone can do. So here I can say, एक लेखक ने सही लिखा है कि opportunities are like sunrise. If you wait too long, you will miss them. So what thing we need to take care is कि जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे मन में काफी सवाल रहते हैं कि क्या मैं इस प्रोफेशन में जाऊं, क्या ये नया वर्टिकल चालू हुआ है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर यू मे से फॉर सर्विस, तो फॉर सीए कलीग्स इन सर्विस, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम्स मेनी टाइम्स, दे नॉक आवर डोर्स. बट हमारे जो कंफ्यूजन्स रहते हैं, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचारते हैं, कई बार उस पर रिस्क लेने में डरते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हमारा दरवाजा खटखटा के किसी और के यहाँ चली जाती है. बट my dear friends, that opportunities are not monopolized. हमें नए नए वेंचर्स, नए न्यू एवेन्यूज हमेशा उसके लिए ओपन रहना चाहिए. उसके लिए इंस्टीट्यूट को हमें थैंक यू करना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट nowadays they are offering number of courses in every field, फॉरेंसिक या कोई भी ले लीजिए, अभी हम डिस्कस करेंगे. सो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, वी नीड टू अपग्रेड आवर नॉलेज, और हमें उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स करने चाहिए, सो दैट टू गेन अ स्पेशलाइजेशन. Okay, so let me tell you that today we are living in the world of disruption. अभी चारों तरफ disruptions चल रहे हैं. Either by way we are experiencing introduction of various laws, new laws, like IBC, one of them, and money laundering or blah blah blah, and a flood of amendments in अभी सर जैसे सर्विस टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह में तो अमेंडमेंट्स, आज आपने क्या किया, कल क्या होने वाला, nobody knows, because there are number of amendments are there. Technological advancements आ रहा है. All these things is significantly impacted our businesses and profession as well. But the good part of all these disruptions are they are coming with lot of opportunities for our members at large. जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, अगर आप ब्लॉकचेन देखें या कुछ भी देखें, तो जैसे आईबीसी, अगर हम आईबीसी की बात करें, सी आईबीसी में माय फेलो मेंबर्स, यहाँ पे सीनियर मेंबर्स, प्रोफेशनल कलीग्स भी बैठे हैं, बट मैं यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि आईबीसी आया जब भी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, बट आप अगर नॉलेज लेवल देखेंगे, इफ यू विल सी द नॉलेज लेवल, तो जिस समय चाहे एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया हो, चाहे एक सीनियर ने किया हो, बट वहां पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी का जो लेवल था, जो अपॉर्चुनिटीज के जो डोर थे, अपॉर्चुनिटीज की जो डेप्थ थी, वो दोनों के लिए समान हो गई थी. तो अपॉर्चुनिटीज जब भी आती है, जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एडवांसमेंट्स आते हैं, कुछ भी आता है, तो वहां पे फॉर द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई बिलीव मी फ्रेंड्स, कि हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है वहां पे, उस केस में हमें नए फील्ड में चले ही जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जो सीनियर्स एस्टैब्लिश है, उनके साथ compete करने के बढ़िया, we should innovate new things. We should not a competitor, we should be innovator, right? So जो emerging areas थे, GST में आप we have just experienced GST implementation of GST law throughout the India, और काफी चार्टेड अकाउंटेंट्स, इवन मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी अच्छी जीएसटी फर्म्स, जो पुरानी प्रैक्टिस थी ट्रेडिशनल, उनको छोड़ के जीएसटी प्रैक्टिस में उन्होंने डेवलप किया, लिटिगेशन में डेवलप किया,
तो उन लोगों ने उस विद इन दैट सिटी उन्होंने एक अच्छी गुडविल रेपो बनाई है, स्किल डेवलप करी है, टीम डेवलप करी है, और आज वो दे आर डूइंग वेरी वेल अंडर दिस जीएसटी। सीए एज ए एंटरप्रेन्योर, द नेक्स्ट सीए एज ए एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग कभी इस एवेन्यू में कभी हम लोग सोचते नहीं है सीए एज ए एंटरप्रेन्योर, बिकॉज आज की तारीख में बिजनेस करना इट इज नॉट इजी, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कंप्लायंसेस अंडर वेरियस लॉज वन बिजनेसमैन नीड टू कंप्लाई. So we chartered accountant always consult our client regarding the project report, regarding the working capital management, financial management, business planning, restructuring, everything. So we are specialized in that field. हम देखते हैं हमारे सामने सामने एक जो क्लाइंट आता है, वो हमने उसका 1 करोड़ का लोन कराया, 10 साल बाद वही क्लाइंट 100 करोड़ का लोन ले रहा है. तो जो बिजनेस ग्रोथ है उसकी, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उसका क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ही इज अर्निंग बाय हिज स्किल्स, बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें भी बिजनेस में फोकस करना चाहिए. अगर कहीं भी किसी का मन है, कहीं किसी का इंटरेस्ट है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो आई नो नंबर ऑफ पर्संस दोज हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट दोज हु आर लीडिंग सम बिजनेस एंटिटी, बिजनेस फर्म, एंड दे आर लीडर्स इन दैट फील्ड. For example, Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, he is also a chartered accountant. And उसका स्टेटमेंट था कि फैमिली के फोर्स से मैंने सीए किया. आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड डूइंग सीए, बट उसका स्टेटमेंट था कि मैंने सीए किया, और आज जो जब मैंने when I have taken the charge of Aditya Birla Group, the net worth of that group was approx 5,000 crore, and today it is about more than 1 lakh crore. तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं सीए नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था. तो सीए क्या कर सकता है दोस्तों? Second example is the AU Small Finance Bank. The Sanjay story of entrepreneur CA Sanjay Ji Agrawal. He belongs from Jaipur. I know him. He was started project finance work by taking DSA direct selling agent of various banks. और फिर उन्होंने कंपनी फॉर्म करी NBFC with a capital of 1 lakh rupees. एक कंपनी पहले फॉर्म करी 1 लाख की कैपिटल से, देन उसका जो भी रिक्वायरमेंट था 25 lakhs कैपिटल वगैरह करके उन्होंने एनबीएफसी का लाइसेंस लिया. देन ग्रेजुअली ही स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, ही अट्रैक्टेड इन्वेस्टर्स इन दैट पर्टिकुलर एनबीएफसी, एंड अभी आप देखेंगे द कंपनी इज हैविंग मोर देन 30,000 crore ऑफ वैल्यूएशन. वो बंदा स्कूटर पे घूमता था जयपुर में, वाज बिलोंग फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली. तो सी एज ए एंटरप्रेन्योर भी हमारे पास बहुत सारा स्कोप है, because we are well versed with various financial instrument as well. तो कहाँ से फाइनेंसिंग करनी है, कहाँ से इन्वेस्टर्स लाने हैं, हम नॉर्मली दूसरों के लिए कंसल्टिंग करते हैं. तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जांपल जो रामदेव जी का आ रहा है, जो 2-3 दिन पहले मैं मॉर्निंग में 5 बजे जब योगा करता हूँ टीवी ऑन करके, तो रामदेव जी कह रहे थे कि इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा जो एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड ब्रेन है या एजुकेटेड युवा है, वो एजुकेटेड होने के बाद इंडिया को रहने लायक नहीं मानता है, वो फॉरेन चले जाता है, फॉरेन अट्रैक्ट करता है उसको. तो उसके लिए उसने कुछ भारतीय शिक्षा बोर्ड की एक गठन किया, बोले मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस माइंडसेट को. तो यहाँ पे वही एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगा कि सीए का जो माइंड सेट है, नॉर्मली वी गो इन प्रैक्टिस और इन सर्विस, बट यहाँ पे हमें सीए एज एंटरप्रेन्योर भी एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ वेरी वंडरफुल डिग्री. बिलीव मी, अगर बिजनेस फेल भी होता है इन एनी केस, तो सीए की डिग्री तो कहीं जाने वाली है नहीं. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग, या बिकॉज someone said that it's always okay to start amateur. तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है तो. Yes. So what are the other emerging areas for chartered accountants? One is ADR, arbitration, mediation, conciliation, anti-money laundering law. ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आने वाले टाइम में इट इज वेरी इमर्जिंग एरिया. और इवन अपने इंस्टीट्यूट जो है ऑलमोस्ट सारे एरियाज पे देयर आर वंडरफुल प्रोग्राम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय आवर ओन इंस्टीट्यूट. Forensic accounting and fraud detection. Forensic accounting is again one of the very important and emerging area, because जितने भी IPs हैं, even under this IBC, each and every RP is appointing forensic auditor. So FAFD course भी जो institute का है, that is also very wonderful course. Forex and treasury management, independent directors, yeah, it is again very good course. It is provided by, I think, offered by MCA.
Then valuation for security and financial asset, SFA valuer. A chartered accountant in practice can be SFA valuer, registered SFA valuer. And believe me friends, SFA valuation का scope इतना आने वाले time पे कि जो SFA valuers है वो कम पड़ेंगे, because जब ये IBC personal insolvency पे भी एक limited part तक applicable हुई है, जब ये fully अंगड़ाइयां लेगा जब IBC इंडिया में जब fully applicable हो जाएगा, then इंडिविजुअल पे आईपीस कम पड़ने वाले हैं, वैल्यूअर्स कम पड़ने वाले हैं. इसीलिए एसएफए once again it is a very huge potential is going to come. And least but not the last, which is our topic for the today, insolvency and bankruptcy. So these are the some of emerging area. There are many others. So let us understand what about the insolvency and bankruptcy, because the chairperson has given us a mandate that most of the person are not IP. So we have taken basic understanding about this code. May I know how many IPs are in the session? You may write in the chat box yes. जो भी है वो yes write कर दें chat box में. So I will able to just to take an overall idea. Okay. अभी तक तो शायद I am not able to. Okay, so अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया. It means there is no IP in this session. Okay. So general overview on the insolvency and bankruptcy code. Okay, so what is the insolvency? Insolvency is a state where liability of a entity, person, or whatever firm is exceeds its assets. Liability exceeds asset. It is a state, and when this state, if it is treated, it is called resolution. When if it is treated, it is called resolution. And for the corporate, it is called corporate insolvency resolution process. For individual, it is called individual resolution process. And if it is not treated, when liabilities are more than the assets and not treated, or resolution fails, then for the corporate it is called liquidation. For individual it is called bankruptcy. See, this whole concept is you need to understand the fundamental of this concept, because confusion last में क्या होता है कि CIRP, IRP, bankruptcy, liquidation ये सब क्या है. तो the simple thing is, जहाँ पे कॉर्पोरेट है वहां CIRP है, जहाँ पे इंडिविजुअल है वहां IRP है, जहाँ पे कॉर्पोरेट लिक्विडेशन में है तो कॉर्पोरेट अगर लिक्विडेट हो रहा है तो लिक्विडेशन में है, इंडिविजुअल है तो बैंकरप्सी है. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट. Okay, because IBC is a evolving law, there are so many myths in the market. One very big myth is that always banker says when you are appointed as a RP in any case, तो बैंक सबसे पहले यही सवाल करता है कि सर आप कितना रिकवर करके दोगे. So my very first question to all of you is, IBC meant for recovery? You can type in chat box yes or no. Is IBC is meant for recovery? It is for resolution. It is not for recovery. Because bankers कई बार प्रेशर करते हैं आरपीस पे. इनिशियली तो बहुत ज्यादा करते थे, अभी भी करते हैं कि साहब आपने प्रोसेस तो कर रहे हो बट हमारी रिकवरी नहीं आ रही है. तो we need to make them understand that the core concept, core fundamental of IBC is not recovery, it is for resolution. ये हम और आगे डिटेल में समझेंगे. The second is IBC is meant to kill businesses? ये एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है उनका बहुत बड़ा एक always they feel that IBC is killing businesses, is killing entrepreneurs. But no,
IBC is not meant to kill the businessmen. It meant to promote entrepreneurship. How हम आगे डिस्कस करेंगे इसको भी. पैराडाइम शिफ्ट. सी आईबीसी आने के बाद पहले क्या होता था, प्रीवियस 2016 आप देखेंगे तो डेट, जो एंटरप्रेन्योर डेट लेते थे, सारे नहीं बट कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसा मानते थे कि डेट आर नॉट मेंट टू रीपे. वो बैंक के साथ प्ले करते थे. ऑलवेज दे टेक enhancement for new projects or expansion or extension or technology upgradation whatever. और जब रीपेमेंट का टाइम आता था तो they were having various type of excuses, problems, economical, internal, external, whatever. So यहाँ पे आईबीसी आने के बाद एक पैराडिग्म शिफ्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है सप्लायर्स का भी, एंड जो एंटरप्रेन्योर है now they are thinking that either we have to pay debt on right time or otherwise IBC is there to take care. So एक बहुत बड़ा पैराडिग्म शिफ्ट हुआ. यहाँ पे मैं let me give you example, very live recent example of SR Steel. SR Steel because मैं भी उस कंपनी में काफी कंसल्टिंग देता हूँ. So SR Steel में ऐसा था कि 2008 के बाद they have not repaid their debt properly. हमेशा रिस्ट्रक्चरिंग और कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. और हमें वो ऐसे डिमांड करते थे बैंकर से कि भाई आप 5,000 करोड़ हमें रिलीज करिए, अदरवाइज आप ये प्लांट की चाबी ले लीजिए, आप संभालिए, वी आर अनेबल टू रन द फैक्ट्री. इस तरह के भी कमेंट्स आते थे उस समय बैंकर्स के सामने. बट जब आईबीसी आया, देन राइट नाउ इफ यू विल सी आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इज देयर, एंड उन्होंने अराउंड 42,000 करोड़ का ऑफर दिया. देन जो रुयाज हैं प्रमोटर्स, ओरिजिनल प्रमोटर्स, उन्होंने हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक गए. दे टोल्ड दैट वी आर रेडी टू पे 100% ऑफ द डेट, इंक्लूडिंग ऑपरेशनल डेट, गवर्नमेंट लाइबिलिटीज, एवरीथिंग वी आर रेडी टू पे, रेडी टू रीपे. बट द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वेरी नाइस रिमार्केबल जजमेंट दैट अभी आपके पास टाइम नहीं है. उस समय आप क्या कर रहे थे जब आपको टाइम था रीपेमेंट करने का? व्हाई यू हैव नॉट पेड? व्हाई यू हैव वेटेड टिल डेट? Once we have received the resolution plan and it is passed, authorized by the COC and NCLT, then you can't do anything. तो ये बहुत बड़ा एक पैराडिग्म शिफ्ट हुआ. जो पहले जो प्रमोटर्स थे, जो प्ले करते थे बैंकर्स के साथ या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के साथ, तो नाउ उनकी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, बिजनेस पैटर्न है, वो सारा आईबीसी आने के बाद सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है. ओके, सो let me share a report with you, because to understand this IBC further, one global competitiveness report of the World Economic Forum, this report identifies 3 factors, 3 drivers which contribute in growth of a country's economy. What are those? One is the basic requirement. ये हमने शायद 11th 12th और first year में हमने पढ़े हुए हैं सारे. One is the basic requirement such as institutionals or resources. Second is competition, free competition. And third is innovation. And further, this report says that where in the economies where reliance on the competition and innovation is less than 40%, and those economies are called as a first stage of development economy, जो विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं. और their per capita GNP is less than or equal to $2,000, and where reliance on competition and innovation is more than 80%, then this is called 5th stage of economy, developed economy, and the per capita GNP is more than $17,000. Okay, why we are see, हम ये बेसिक चीजें ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि आईबीसी का कोर कंसेप्ट हमें समझ में आए कि आईबीसी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. So economic freedom and economic performance have very high positive correlations. जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम जितनी ज्यादा होती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स, एंटिटीज, फर्म्स, वो इंक्रीज होती है सिग्निफिकेंटली. एंड ए फर्म नीड इकोनॉमिक फ्रीडम ब्रॉडली एट 3 स्टेजेस ऑफ ए बिजनेस. वन इज, उसको क्या चाहिए बिजनेसमैन को? एक लोडा जी का बहुत बड़ा व्हाट्सएप वीडियो चला था जो आई थिंक सबने देखा होगा, लोडा बिल्डर्स मुंबई. उन्होंने एक एक प्लेटफॉर्म पे बोला था कि हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं
कि गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहते हैं, वो कुछ नहीं करे, हमें अपने हाल पे छोड़ दे तो भी हम अपने आप से कर लेंगे सब कुछ, बस वो टांग ना अड़ाए हमारे बिजनेस में। तो यहाँ पे जो है, जो बिजनेसमैन को चाहिए एक तो फ्री एंट्री, कि कंप्लाइंस कम से कम हो टू स्टार्ट ए बिजनेस। यहाँ इंडिया में अभी मल्टीपल कंप्लाइंसेस हैं, बट वी ऑल आर एक्सपीरियंस दैट हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लॉ, वो सडनली एकदम जंप किया था। तो फ्री एंट्री टू स्टार्ट ए बिजनेस, फ्री कंपटीशन टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो फ्री एंट्री हमारे यहाँ ऑलमोस्ट थी, अभी काफी अपग्रेड हो रही है। कंपटीशन भी था हमारे यहाँ पे, बट फ्री एग्जिट वाज नॉट देयर टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस। अगर किसी हम एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेसमैन को एक क्रिमिनल की निगाह से देखते थे, अगर उसका बिजनेस फेल हो जाता है, उसका बैंक लोन एनपीए हो जाता है, या उसका और कोई कारण से बिजनेस फेलियर हो जाता है, तो और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, ही हैज टू मूव टू वेरियस कोर्ट्स, वेरियस लिटिगेशंस, और उसकी पीढ़ी निकल जाती थी वो लिटिगेशन लड़ते लड़ते। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि पिताजी लड़ रहे हैं तो बेटे तक रिजल्ट आएगा उसका, क्योंकि कोई फास्ट डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म नहीं था। तो ये आईबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फ्री एग्जिट टू द एंटरप्रेन्योर्स। हाउ इट प्रोवाइड्स, ये भी हम फर्दर समझेंगे आगे। उससे पहले ये कोर कंसेप्ट का एक टेबुलर चार्ट मैंने बनाया है, ये और इजीली वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो देन प्रोविजंस आर वेरी इजी। सो सी, वेयर हायर कंपटीशन एंड इनोवेशन इन एनी कंट्रीज इकोनॉमी, then higher rate of business failure will be there. In another study report, financial study report, which was conducted in America, United States, that report says that in USA, almost 95% of business fails within 3 years of their start. 3 साल में business fail हो जाते हैं 95%. Only 5% business survive. But those 5%, they lead the world. So in the country where higher rate of business failures are there, business failure can be of two types. One is for internal reasons or external reasons, that is exogenous or endogenous reasons. Then here the IBC play a very significant vital role. It says it divided firms in two parts. One is failing but viable firms. Second is failing and unviable firm. So the treatment of both these firms are different. The part A, which is failing but viable firm, the IBC provide a resolution mechanism for them. Resolution by the way of transferring the firm in the hand of efficient management from inefficient one, right? It says you transfer the firm from the efficient management to the efficient management from the inefficient one, right? because माइक्रो लेवल पे हो सकता है कोई बिजनेसमैन बोलेगा कि नहीं यार, आईबीसी आने से मेरा धंधा चला गया, कोई दूसरा प्रमोटर आ गया। बट in many cases where management are unable to put money investment by the way of maybe working capital requirement, by the way of technology upgradation or anything, कि business में उस समय requirement है but they are unable to infuse, or there may be some other factor, external factors which affects those entrepreneurs or businessmen, then here IBC give a very fast decision making mechanism. It provides 180 days resolution period, 180 days total, 180 दिन में नया promoter आ जाएगा, पुराना चला जाएगा। तो why it says, because those assets, those companies, those entities are important for the nation. They are contributing to our GDP directly. They are generating employments, they are generating revenue for the government, and many times the MSME also providing, supporting to them. So they are generating businesses. That's why this IBC provide a fast resolution process. And the second type of entities is a failing and unviable firm, where the viability in the business is in question or is not there. Then the IBC provide liquidation mechanism to resolve them. By the way of liquidation, IBC says you redeploy the assets of firms and release the management. Redeploy the assets
फॉर अल्टरनेटिव यूज, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई सारी कंपनीज एनपीए हो जाती है, उसके बाद बैंक ताले लगा देते हैं, मशीनरी मतलब मशीनरी की टोटल वैल्यू खत्म हो जाती है, प्लांट की वैल्यू खत्म हो जाती है, जो सिक्योरिटी होती है फुल फ्रेज होती है, धीरे धीरे मशीनें खत्म हो जाती है, कोरोजन जंग लग जाता है उनमें, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है 10 साल में। तो IBC says immediately you redeploy those assets in alternative uses and release the management, और उसका जो प्रमोटर है, जो मैनेजमेंट है, उसको आप रिलीज कर दीजिए, ताकि he can also concentrate on other business or other area, and he can also generate something, he can contribute to GDP. So this is a very good mechanism which is provided under this code. What is the basic objective of IBC? हमने अभी जो ये पूरा कोर कंसेप्ट समझा, उसमें ऑलमोस्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पकड़ लिए हैं, बट जस्ट टू नरेट, it consolidate and amend laws of various laws of the insolvency and bankruptcy. Multiple laws चलते थे पहले, more than 10 even, उन सबको consolidate किया. It provides a time bound resolution process, 180 days for the resolution, and for the liquidation 1 year. It maximizes the value of assets. How it maximize? By providing time bound resolution immediately. जो भी resolve करो, जो either by way of change of management or by way of liquidation or bankruptcy. It provides easy exit option and to promote entrepreneurship. Alternation in the priority of the payment of government dues. It is once again very important thing. By introduction of the IBC code, government has also altered their priorities. पहले क्या होता था, एनपी अकाउंट्स में गवर्नमेंट और बैंक आपस में लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट कहता पहले मेरा ड्यू, वो पहले मेरा ड्यू. अभी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गवर्नमेंट ने कि उनका ड्यूज जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ ट्रीट किया जाए. देन क्रेडिटर्स इन कंट्रोल. So whenever the case under IBC admits, an independent person, insolvency professional is appointed as RP, and the management existing promoters are suspended, called as a suspended management. All powers, role and responsibilities are vested with the new IP or RP, and he will manage the day-to-day corporate affairs of the company. So the benefit is that he will take consultation with the with prior consultation with the COC members. Those are financial creditors. He will run the company accordingly. So creditors in control. Inefficient to efficient. It provides to transfer the asset of the company or company from inefficient management to efficient one. Okay. These are the acts which are consolidated in the code. The structure of the code. This code is divided in total 5 parts. Part 1 is for short title, definitions, etc. Part 2, which contains 7 chapters. It deals with CIRP, liquidation, fast track, voluntary, winding up. Part 3, it also contains 7 chapters applicable to individual firms, fair start process, etc. Part 4, which deal with institutional framework, IPs, IPAs, IUs, code of conducts, etc. Part 5 provide repeals, amendments, transition provision, जो कि सब कोड में होता है. पहला और part 1 and part 5 तो सब में होता ही है, right? And the regulatory mechanism is in such a way, there is a IBC code, then under this IBBI is there, Insolvency and Bankruptcy Board of India, and parallelly executing authorities are there जो कि decide करती है. Then under this IPA, insolvency professional agencies are registered, then insolvency professionals, IPEs, RVs, and information utilities. So this is the regulatory mechanism of this code. And purpose of the insolvency resolution process is to make sure that the debtor is properly relieved from their debt, and making sure that the creditor are repaid their debts in fair and expedient manner. ये यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि कितना परसेंट रिकवरी हुआ है. In fair and expedient manner. The intention of the code we have already discussed. There's insolvency moved from erosion of net worth to default. Independent person to take over the management and operation of the borrower. Best information between creditor and debtor. And in case of fraudulent divergence of the asset, personal contribution can be sought. Imprisonment provisions are also there.
Okay. Then what is our bread and butter? जो कि सर ने बताया था कि जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स यहाँ पे बहुत वाइटल रोल और इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज हम बिजनेस रन कर सकते हैं. वी आर फाइनेंस गाय, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड वी कैन रन. तो चार्टेड रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट अंडर होल आईबीसी? एक चार्टेड अकाउंटेंट, if he has cleared, he or she has cleared IP examinations, then he can be appointed as a IRP, interim resolution professional, जो कि normally up to 30 days, up to first COC meeting after admission of the case, up to first COC meeting IRP होता है, जो कि सारे क्लेम मंगवाता है, सारे क्लेम को वेरीफाई करता है, COC कमिटी कंस्टिट्यूट करता है, फर्स्ट COC मीटिंग कंडक्ट करता है, तब तक इसका रोल रहता है. Then RP. In first COC meeting, either IRP is reappointed as RP or it is replaced. He or she is replaced by another RP. Then liquidator. As a liquidator, there is a good potential, because in liquidation we are also having a very skilled team which liquidate various assets available with the corporate debtor or individual guarantors. Then representative for class of creditors. Representative, he can be a representative for the class of creditor as prescribed under the IBC code. अच्छा, लेकिन अगर IP नहीं है, अगर आप IP नहीं है तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है. Reason being, अगर आप IP नहीं है तो भी there is lot of scope in this IBC code. What is that scope? Let us discuss. I also invite all the members that during the session, if they have any question, any doubt, or they want any clarification, then they can raise their concern in the chat box by typing in the chat box, so that during the session, I will try to address. So not as IP, then a CA can appear before NCLT. यहाँ पे मेरे चार्टेड अकाउंटेंट्स काफी फ्रेंड्स हैं जो NCLT में अपीयरेंस करते हैं for IBC cases. Then he can issue demand notice, issue and reply. अगर किसी को डिमांड नोटिस आया है, उसका रिप्लाई भी देना है, तो सीए के पास ही आता है फर्स्ट स्टेज में क्लाइंट. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार, आई एम नॉट इन दिस प्रैक्टिस, तो हम लोग उसको किसी को रेफर कर देते हैं. तो फर्स्ट अपने को अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हमें कौन सा फील्ड चूज करना है. तो जो भी फील्ड आप चूज करें दोस्तों, एक थ्योरी है जो बहुत वर्षों से चली आ रही है कि यू नीड टू गिव एटलीस्ट 1000 आवर हार्ड वर्क इन दैट फील्ड. 1000 घंटे आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे उस फील्ड में, तो यू विल बिकम मास्टर ऑफ दैट फील्ड. और जब आप मास्टर बन जाते हैं तो आपके नाम से लोग आएंगे आपके पास, आपके नाम से काम आएगा. कई लोग की शिकायत होती है कि हमारे पास काम नहीं आता है. बट काम आने से पहले आप काबिल बनिए उस काम लाने के लिए, आप एक्सपर्ट बनिए, बिकॉज एक्सपर्ट का टाइम है अभी, जनरल डॉक्टर का टाइम नहीं है. हम हर जगह एक्सपर्टाइज का काम है. So third is support services to IP or IPE. Support services. In many cases, we appoint support service provider agencies. So those are many times those are chartered accountants. So this is also one of the very big area, because see, जब एक going concern unit होता है, तो we need a lot of skilled person to run that industry. So in that case, we do appoint chartered accountants, other professional to run that particular business plan. Then forensic and transaction audit, as we discussed, that every RP appoint transaction auditor in each and every case, or forensic audit. So under this IBC, we need to establish to determine some transaction, either fraudulent or preferential, undervalued, or whatever. So it is also forensic and transaction audit is also one of the good area for chartered accountants fraternity. Valuation, security and financial assets valuation. अभी even MCA भी जो शेयर इश्यू में भी रजिस्टर्ड SFA वैल्यूअर्स के सर्टिफिकेट्स ही लगते हैं. पहले एक टाइम था जब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चल जाता था वैल्यूएशंस के लिए, बट नाउ-ए-डेज एवरीवन इज डिमांडिंग ए रजिस्टर्ड SFA वैल्यूअर रिपोर्ट, इवन एट MCA आल्सो. सो ये वैल्यूएशन का तो
इतना स्कोप खुलने वाला है जब ये इंडिविजुअल पे इंसॉल्वेंसी एप्लीकेबिलिटी आएगी, तब वैल्यूएशंस पे there will be a huge potential. Preparation of resolution plan. We charge around 1 to 3% of the amount of resolution plan as a fees for preparation of resolution plan. क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो he has to submit a resolution plan before the RP or COC. So इन जो resolution plan है उसमें काफी टेक्नोलॉजीज होती है कि क्या चीजें हमें NCLT से अप्रूव करवानी है, क्या छुड़वानी है, क्या लाइबिलिटी लेनी है, क्या नहीं लेनी है. तो ये बहुत टेक्निकल होता है और नॉर्मली they appoint specialized firms to prepare resolution plan. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है. तो यहाँ पे रोल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट अंडर आईबीसी मैंने एक थोड़ा सा इसको नरेट करने की कोशिश करी है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स पे आप टाइप करिएगा. आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स. Then eligibility for chartered accountant to be an insolvency professional. A CA having 10-year experience can take limited insolvency exam after clearing and apply to IBBI for registration. He has to do some 52 hours training course also. And CA having less than 10 years, उनको भी यहाँ मायूस होने की जरूरत नहीं है, because they can take GIP, that is Graduate Insolvency Program run by IICA, that is Indian Institute of Corporate Affairs, and after completion apply to IBBI for registration. Let us understand the eligibility criteria for that. That is the full time. That is very good program. Maximum 48 persons at a time they take, and the eligibility for the candidate is the qualification is chartered accountant, advocate, cost accountant, company secretary, BTech, postgraduate. Experience, no experience is required here. Age 28 years. जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तब 28 years से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो हमारा इंस्टीट्यूट तो इवन चार्टेड अकाउंटेंट 28 के पहले ही बन जाते हैं हम लोग. तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है. इसका जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज आल्सो गुड. टोटल फीस इज 12,25,000 इंक्लूडिंग हॉस्टल फी, फूड, इंटरनेट फीस. सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर. दिस इज द फुल टाइम रेजिडेंशियल program that is offered by IICA. Okay, so अभी तक कोई क्वेरी है किसी भी मेंबर की तो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन. यहाँ पे सीए मनीष जी हैं जो आईपी है. आई वेलकम हिम आल्सो. Now I thank you friends. Now I request my partner CA Vinita ji Maheshwari to discuss about this personal guarantee provisions under IBC. Good evening, everyone. Good evening, everyone. So we are, since we have already, am I audible, sir? Yeah, yes, you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay, thank you, sir. So we have already discussed the general and basic overview regarding insolvency and bankruptcy code. And insolvency and bankruptcy code has been in place from 2016. But as we have discussed the structure of the code, part 2 provisions were made applicable, but part 3, which is related to the personal guarantee, that is the insolvency of personal guarantors, all the individual promoters, was not introduced, was not notified. From December 2019, by a notification dated 15th of November 2019, these personal guarantee provisions has been notified and they are in place now. Before moving into the depth of the provisions, I would just have a insight regarding some general terms which are applicable and which will guide us further into the structure of the provisions which are notified. So
First is, what is a guarantee? Guarantee, it is a contract of guarantee, is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. So it is a general definition which we have already read under the Indian Contracts Act 1872. And a person, some basic terms which were referred in the Contract Act, which all the parties involved are like, the person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. So guarantee may be oral or written. These terms I have discussed and I have defined here because these small terms have a specific significance under IBC. As we have discussed under guarantee, so further is what a guarantor is. अभी जैसा ऐसा था कि पहले तो लोग कैसे भी they used to give guarantee कि ठीक है, I am the corporate borrower, I don't have any guarantor in place, तो किसी friend को बुलाया, चलो तुम guarantee के agreement पे sign कर दो, this is your profile, this and they used to give the guarantee. पहले ऐसा बहुत ही maybe learned chartered accountants are there, so they maybe having this crux ki, yeah, this was a structure earlier, but आज हमारा ये ऐसा प्रोविजन है कि हमें लोन गारंटर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, दिस शुड आल्सो बी डिसाइडेड. A guarantor which has been defined under personal guarantors rules. So guarantor means a debtor who is a personal guarantor to a corporate debtor and in respect of whom the guarantee has been invoked by the creditor and remains unpaid in full or in part. तो अभी क्या है कि because limitation act भी IBC पे applicable हो गया है from 2018, तो गारंटर वो है जिसके अगेंस्ट अ पर्सनल गारंटी हैज बीन इन्वोक्ड बाय द क्रेडिटर एंड इट रिमेन्स अनपेड. These two terms are very important, friends. It has been invoked and remains unpaid. What is a personal guarantor? Personal guarantor वो है जिसने personal guarantee दी है. So personal guarantor means an individual who is the surety in a contract of guarantee to the corporate debtor. Further, one more term which has been defined is the corporate guarantor. So, corporate guarantor means a corporate person who is the surety in the contract of guarantee to the corporate debtor. All these terms have been clearly defined under IBC and personal guarantee rules. Since we have discussed guarantee, guarantor, so there should be a debt in order to have these parties available. As per section 3 part 11 of IBC, debt means a liability or a obligation in respect of a claim which is due from any person and includes a financial debt and an operational debt. General term, it can be a financial debt or a operational debt. These various terms we have tried to address in our book, which was written in the lockdown period. We have covered rights and duties of banks and financial institutions, rights and duties of personal guarantors, provisions relating to personal insolvency and bankruptcy, because this is an upcoming field. Since the notification came in December 2019, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि these guarantees were not invoked. In March 2020, there was a judgment of Union Bank of India, Union of India, that is central government versus Saurabh Jain,
and in that Supreme Court has given a mandate कि क्यों अभी तक personal guarantees invoke नहीं हुई हैं. So it was addressed to Government of India, then Government of India addressed to all the nationalized and private banks to invoke the personal guarantee, और उसके बाद lockdown हो गया. So these all provisions have come into picture from now on. अभी 2-3 महीने से ही ये एकदम full Or this fledged is हुआ है. applicable to the personal guarantor to the corporate debtor only. So अभी भी जो दूसरे सी इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, उस पे भी एप्लीकेबल होना बाकी है. ऑल्दो कोड प्रोवाइड्स फुल प्रोसीजर, ऑल प्रोविजंस आर देयर, बट एप्लीकेबिलिटी इज पेंडिंग. सो ये एप्लीकेबिलिटी जैसे ही इन पर्सनल पे या फर्म्स पे, पार्टनरशिप फर्म्स और इन पे होगी, तो आईपीस दोस्तों याद रखिएगा, आईपीस कम पड़ेंगे, बिकॉज इतनी सारी फर्म्स है. और बॉम्बे में और मैंने देखा है कि जो क्लाइंट्स एंट्रीज लेते हैं इधर की उधर, उधर की इधर, जो नंबर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स रहते हैं, तो वो डिमांड करने लग जाएंगे. एक मेरे केस में हुआ ऐसा, एक बंदे ने 2 करोड़ रुपए की एंट्री थी, दे रखी थी, देन वो कॉर्पोरेट डेटर भाग के आया कि उसने आईबीसी में मेरा केस लगा दिया है. एंड एक्चुअली वो लाइबिलिटी नहीं थी उसको रीपे करने की, इट वाज सेटल्ड, जो होता है आपको ध्यान है. बट अगेन ये उसको, क्योंकि रनिंग कंपनी थी, तो अगेन उसके साथ उसको सेटलमेंट करना पड़ा उसके साथ. तो ये जब पर्सनल इंसॉल्वेंसी पे एप्लीकेबल होगा, तब तो दोस्तों आप देखना कि कितना केओस होने वाला है, बहुत बड़ा. पूरा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा इंडिया का जो मैकेनिज्म है ट्रांजैक्शन का. We will need huge infrastructure and huge team of professionals in order to handle the insolvency for individuals. And maybe this is the reason that government has not made it applicable to all the personal guarantors. It is only applicable to personal guarantors to corporate debtor. So we have narrated various case laws, rules and regulations regarding this in the book. The major crux, part 3 deals with insolvency and bankruptcy of individuals and partnership firms. And uska jo chapter 3 hai, it divides individuals and partnership firms into 3 categories. एक तो individuals होते हैं जिनके पास कोई business नहीं है, salaried people हैं, other income है, house property है. So those can be the individuals without any business. एक हो सकते हैं individuals having business or property, they may be running sole proprietorships, partnership firms, और एसोसिएट्स हो सकते हैं. एक हो सकते हैं जो पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट पर्संस हैं. तो इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट ऑल 3 विल बी नोटिफाइड इन फेजेस. सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस सेपरेट होंगे एंड दे विल बी अ फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. And till now, only the provisions relating to third category, that is the personal guarantors to corporate debtors, have been notified. And ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, फॉर्म्स एंड अदर इंडिविजुअल्स. सिंस the adjudicating authorities, they have been defined under code. Adjudicating authorities for corporate persons are NCLTs and NCLATs, the appellate tribunal. But जो individuals के लिए defined है वो है DRT and DRAT, that recovery appellate tribunal. But when these provisions from 2019 were applicable, तो section 60 के अंदर एक चीज कही गई है, that जहां पे CIRP या liquidation is in process against a corporate debtor, and at that place a personal guarantee is invoked, तो NCLT या NCLAT ही appellate authority होगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टेक कि SR है, SR ऑलरेडी इट वाज इन CIRP. अगर SR ऑलरेडी CIRP में है और उसके पर्सनल गारंटर्स के अगेंस्ट SBI पर्सनल गारंटी प्रोविजंस इन्वोक करता है, तो दैट विल नॉट गो टू DRT, दैट विल गो टू NCLT Ahmedabad only, because NCLT Ahmedabad is already dealing with the CIRP procedures of SR Steel. This is just an example to deal with, to narrate how these provisions will be applicable. And in case koi CIRP or liquidation process is not running under against the corporate borrower, जैसे कि directly personal guarantee invoke हुई है, corporate borrower के against में there is no invocation to repay debt, to demand the sums repayable. So the case will move into DRT and it will be run under the provisions of DRT only.
Section 78, 79, 94 to 187, all these provisions have been made applicable, notified from notification dated 15th of November. And part 3 I have already discussed ki with respect to 60 part 1 and 2 जहाँ पे adjudicating authority already है for this corporate debtor. So for corporate guarantors as well as for personal guarantors, same adjudicating authority will be applicable. एक जनरल जो आफ्टर गेटिंग ऑल दिस ओवरव्यू जो एक क्वेश्चन आता है मे बी आपके माइंड्स में भी आया होगा कि इज इट नेसेसरी टू इनिशिएट सीआईआरपी अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर बिफोर invoking personal guarantee. I would invite all the members here to discuss and to share their views, what they think कि क्या जरूरी है कि सीआईआरपी पहले इनिशिएट की जाए कॉर्पोरेट डायरेक्टर के अगेंस्ट बिफोर इनिशिएटिंग अगेंस्ट पर्सनल गारंटर. Yes, it is right कि two people are saying ये डिसाइड भी हुआ है, not necessary, right? Because Ferro Alloys Corporation Limited versus Rural Electrification, और we can say बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जैसे कि डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल वर्सेस पिरामिड इलेक्ट्रिकल्स, आईसीआईसीआई बैंक का एक केस था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक केस था. इन सब में एक ही चीज जो डिफाइन करी है वेरियस अथॉरिटीज ने, वेदर इट बी अ सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी, that it is not necessary to initiate CIRP against the principal borrower before initiating CIRP against the corporate guarantors. And Supreme Court ने भी इसी व्यू को अपहेल्ड किया था इस केस में, फेरो एलॉयज के केस में. एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये और व्यू दिया था फेरो एलॉयज के केस में कि देयर आर पेनल्टी प्रोविजंस आल्सो regarding the imprisonment for personal guarantors, and they should be taken care of in case no repayments are made timely. Same can be the case for corporate guarantors. Like for claim amount, CIRP is already initiated अगेंस्ट कॉर्पोरेट बोरोवर, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या सीआईआरपी ट्रिगर कर सकता है अगेंस्ट अदर कॉर्पोरेट गारंटर्स. तो इन दैट केस आल्सो इसका आंसर पार्टली यस है, बिकॉज द आंसर विल बी लाइक कि विष्णु कुमार पिरामिड एंटरप्राइजेस was a financial creditor in the case, and Vishnu Kumar Agrawal was the shareholder for a cooperative society who has taken loan of 38 crores from Piramal Enterprises. Piramal Enterprises ने क्या किया कि they proceeded with issuing the notices to इसमें two corporate debtors, corporate guarantors थे, Sunlight and Sun Life, and Piramal Enterprises issued demand notices to all three, that is corporate debtor को भी issue किया, corporate guarantors को भी issue किया. तो NCLT ने ऐसा बोला कि there is no bar in the INB code for filing simultaneously two applications under section 7 against principal borrower as well as corporate guarantors, but once for the same set of claim application under section 7 against either corporate debtor or corporate guarantor has been admitted, तो फिर the application for same amount, same set of claim or default cannot be admitted. But I would say that this was decided in 2019 approx, maybe in January 2019 this case came up. After that various NCLTs have been laying emphasis on this, but there are prejudicial views because some people are saying that in case we deny this remedy to financial creditor to apply for personal guarantee or corporate guarantee provisions invoking
the corporate guarantee provisions in time. So there may be limitation issue afterwards. So, and as we have already said, ki these provisions are into place from just few months. So we expect various changes and various case laws to come up regarding this. And Supreme Court has already laid down a view in August 2018 in the case of State Bank of India versus Ramakrishna. तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था that we will not deny the remedy available to corporate financial creditor to initiate a corporate debtor insolvency as well as a personal guarantee because सेक्शन 14 जब 2018 में मॉडिफाई हुआ सेक्शन 14 रिलेट्स टू मोरेटोरियम बीइंग एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट डेटर वहां पे भी इट वाज क्लैरिफाइड in 2018 that these provisions of moratorium of denying the institution of suits against corporate debtor are not applicable to personal guarantors, that is surety to debt for corporate debtor. So Supreme Court has already upheld this view in 2018 and we expect same provisions. Abhi bhi ek Supreme Court mein case is running regarding Bishal Enterprises. In that also we expect ki Supreme Court will come up with something which will all guide us regarding invoking of personal guarantee provisions along with corporate debtor, and the claim amount may be different in that case, so that will be notified. This is a general idea of how the personal guarantee provisions rule of. अभी कुछ terms which have been specifically defined for personal guarantors. We don't have excluded asset type of form type of term in corporate insolvency, but excluded assets have been defined under personal insolvency. तो excluded asset क्या होगी, जैसे कि excluded asset मैं एक chartered accountant हूँ, I move for a personal insolvency. तो in order to earn my livelihood I would be in a need of a लैपटॉप मुझे चाहिएगा कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, टेबल चेयर है जहाँ पे मैं अपना प्रोविजंस मैं अपने जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो मैं कैरी आउट करती हूँ. जैसे एक कारपेंटर है, कारपेंटर विल बी इन नीड ऑफ द टूल्स कि उसको जो कुछ स्पेसिफिक टूल्स है जिसके बेसिस पे ही विल वर्क ऑन. तो दोज इक्विपमेंट्स, दोज टूल्स, दोज बुक्स, जैसे मेरी कुछ बुक्स हैं, दोज व्हीकल्स जो उसको कैरी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कोई पर्सनल नेम में कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चल रही है उसके नेम में व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो ऑल दीज विल बी एक्सक्लूडेड असेट्स फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब जो भी मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या मेरे वोकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, दैट विल बी एक्सक्लूडेड असेट. यानी कि दिस असेट विल नॉट बी काउंटेड इन कैलकुलेटिंग अ रीपेमेंट प्लान टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. कुछ हो सकता है जैसे कि अनएंकम्बर्ड फर्नीचर है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, मतलब ऑल दीज नीड्स टू बी अनएंकम्बर्ड, मतलब कि दीज शुड नॉट बी चार्ज्ड और having a charge, financial creditor should not be having charge on these tools और फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स. जैसे कि मेरा एक नॉर्मल एक सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, जो कि लास्ट पॉइंट है कि एक अनएंकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, मुझे रहने के लिए एक घर हमेशा मिलेगा. इफ आई हैव मोर देन वन तो आई विल बी रिक्वायर्ड टू include that as a asset in other in calculating my balance sheet for making a repayment plan. But एक unencumbered single dwelling unit, the amount has also been specified here. 20 lakhs amount has been specified for a house in urban area, and 10 lakhs amount has been specified for a house in rural area. Further एक कोई अगर कोई unencumbered personal ornaments है of such value, that this such value term has also been defined, that is 1 lakh rupees have been defined for an unencumbered personal ornament. या
these may be of a debtor, मतलब a personal guarantor who is for a corporate debtor, or his immediate family member which cannot be parted with, जैसे कि हिंदू रिलीजियस एक्ट्स हैं, हिंदू रिलीजियस जो कस्टम्स हैं उसके अंदर लेडी इज रिक्वायर्ड टू वेयर अ मंगलसूत्र, तो दैट मंगलसूत्र कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम दैट लेडी, that is a ornament which cannot be parted with in accordance with the religious usage, provided it has a value less than 1 lakh rupees. So these are the excluded assets which will not be counted for making of a repayment plan. Similarly, we have a term of excluded debt also in personal insolvency. तो पर्सनल इंसॉल्वेंसी में ये डेट्स ऐसी हैं जो उसे पे करनी ही होंगी, whether he moves himself into personal insolvency or whether a financial creditor moves into personal insolvency. But these debts will be required to be paid, and these will not be a part of repayment plan. मैं एक स्टूडेंट, जब मैं सीए कर रही थी, आई टुक अ स्टूडेंट लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर कंप्लीटिंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो अगर मैंने वो स्टूडेंट लोन लिया था एंड आई हैव नॉट रीपेड दैट, तो दैट स्टूडेंट लोन विल नॉट बी काउंटेड एज अ डेट फॉर पर्सनल इंसॉल्वेंसी. उसी तरीके से अगर कोई कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने मेरे ऊपर कोई फाइन इम्पोज किया है, इट मे बी इन एनी केस, जैसे कि मैंने कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़े थे या कोई और ऐसा केस था जिसके अंदर की ट्रिब्यूनल हैज लेविड और इम्पोज्ड अ फाइन अपॉन मी, तो आई विल बी रिक्वायर्ड टू पे दैट फाइन. दैट विल नॉट बी अ डेट. कुछ डैमेजेस हुई हैं ड्यू टू माय नेग्लिजेंस और न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन or any other debt which may be prescribed. कहीं मुझे मेंटेनेंस पे करना is necessary. These all are excluded debts. एप्लीकेशन कौन कर सकता है? एप्लीकेशन में बी बाय अ डेटर और अ क्रेडिटर. डेटर जो होगा वो फॉर्म ए में करेगा, मतलब डेटर खुद भी अगर कोई उसने डिफॉल्ट कमिट किया है कि मैं आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पे नाउ, तो ही कैन पर्सनली मूव और थ्रू अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो मूव कर सकता है. इसमें एक केस जैसे कि जो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगी कि एक पर्सनल गारंटर है और ही हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, मतलब कि एक डिमांड नोटिस आया या कोई ऐसा डिफॉल्ट हुआ है जहाँ पे कि व्हीकल लोन मैंने लिया हुआ था एंड दैट पर्सन हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ दैट व्हीकल लोन, तो ही कैन मूव फॉर दिस, ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी. अगर क्रेडिटर, क्योंकि अगर पर्सनल गारंटर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली केस विल बी कि क्रेडिटर विल मूव इनटू दिस इंसॉल्वेंसी, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, तो ही विल बी रिक्वायर्ड टू सबसे पहले उसे गारंटी इन्वोक करनी होगी. जैसे कि बैंक्स हैं, अभी बैंक्स में बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि सरफेसी जब एप्लीकेबल होता है तो गारंटी इन्वोक हो जाती है. In case SURFACI has not been this guarantee has not been invoked under SURFACI also against the personal guarantors, तो a separate form for invocation will be issued. उसके बाद ही आप एक डिमांड नोटिस इशू करेंगे फॉर्म बी के अंदर. ऑल दीज रूल्स फॉर्म्स हैव बीन described and defined under the rules and regulations which have been prescribed in 2019 for personal insolvency. एप्लीकेशन फॉर्म सी में जाएगी. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं विच हैव बीन डिफाइंड. अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पूरा एक चार्ट है वहां पे जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू होगा. इन केस आप पर्सनल इंसॉल्वेंसी जो इन्वोक कर रहे हैं वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू मूव नहीं कर रहे हैं, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विल बी अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो इन सारी प्रोविजंस में वो ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी होती है तो पब्लिक अनाउंसमेंट जो न्यूज़पेपर्स में होता है, जैसे कि एक रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में होगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होगा, दैट विल बी गिवन अप बाय अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. और यहाँ पे एवरी नोटिस इज गिवन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब एनसीएलटी खुद न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी कि दिस हैज बीन एडमिटेड, दिस पर्सन हैज बीन एडमिटेड इनटू पर्सनल इंसॉल्वेंसी, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी. आपका कोई भी क्लेम है तो प्लीज प्रेजेंट विद इन दिस टाइम पीरियड. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहाँ पे है कि कोई भी डेटर कब
इन्वोकेशन कब एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है? अगर ही इज इन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, he is undergoing a fresh start process, individual insolvency resolution process or bankruptcy process, they will not be permitted to carry out. This is the whole resolution process being depicted. अगर हम एक एक टर्म को समझना चाहें तो इट मे टेक 30 minutes to define this whole process, बट हम शॉर्ट में समझेंगे कि एप्लीकेशन जब होती है इंडिविजुअल रेजोल्यूशन के लिए, तो एप्लीकेशन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इट मे बी थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और विदाउट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू है, आरपी को अपॉइंट करेगा एनसीएलटी। एनसीएलटी जब आरपी को अपॉइंट करने, जब एप्लीकेशन होगी फ्रॉम दैट डेट ओनली एक इंट्रिम मॉरेटोरियम प्लेस में होगा। इंट्रिम मॉरेटोरियम कैसे होगा? इंट्रिम मॉरेटोरियम को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो इंट्रिम मॉरेटोरियम में क्या होगा कि कोई भी सूट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कैरी आउट नहीं हो सकता है। कोई भी सूट मतलब कि चाहे आप पैसा मांगते हो, कोई पेंडिंग लीगल एक्शन ऑलरेडी रनिंग था, मेरे अगेंस्ट में कोई व्हीकल का सूट ऑलरेडी रनिंग था, बट किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर हैज invoked the personal guarantee and they have filed an application for insolvency resolution, तो जितने भी सूट्स against the insolvency against that person are was running, वो सब स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, स्टे आ जाएगा उन पर। कोई भी क्रेडिटर या डेटर विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू इंस्टीट्यूट फर्दर लीगल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु इज इन इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। फ्रॉम द डेट आरपी अपॉइंट होगा, 10 दिन देगा एनसीएलटी आपको अपॉइंट करने के बाद में कि यू हैव 10 days, यू फाइल अ रिपोर्ट कि ये प्रोसेस को हमें एडमिट भी करना है कि नहीं करना है। सो यहाँ पे जैसे कि जनरली होता है और इवन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में भी होता है कि एवरी मैटर इज डिसाइडेड बाय एनसीएलटी हिमसेल्फ। एनसीएलटी सारे पर्सन्स को, एडवोकेट्स को सुनती है, क्यों डिस्प्यूट है या नहीं है, क्यों हमें एडमिट करना चाहिए केस को। सारे लिटिगेशंस जो होते हैं वो एनसीएलटी में होते हैं। यहाँ पे क्या है कि आरपी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, 10 days है तुम्हारे पास में, यू गिव अ रिपोर्ट वेदर वी शुड एडमिट द केस और वी शुड रिजेक्ट द केस। इन केस आरपी ये डिफाइन करता है कि नहीं, केस एडमिट होना चाहिए, आरपी को आरपी की जो रिपोर्ट आएगी 10 days के अगेंस्ट अंडर में, तो उस आरपी की रिपोर्ट के बेसिस पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल टेक अ डिसीजन। Adjudicating authority has 14 days. I will say here कि ये जो 14 days हैं, these are directory in nature, क्योंकि हमें ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में देख चुके हैं कि 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल लग जाते हैं एक केस को एडमिट होने में। तो यहाँ तो अभी जब ये पूरा प्रोसेस फुल फ्लैश्ड फॉर्म में आएगा तो हम समझेंगे कि कितना टाइम लग रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू एडमिट द केस। बट हियर कोड हैज डिफाइंड 14 days, तो 14 days में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू आइदर एडमिट और रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्रेडिटर या हिमसेल्फ डेटर भी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर सकता है। ये प्रोविजन ये प्रोविजन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में नहीं था। ये यही है कि डायरेक्टली बैंकरप्सी के लिए फाइलिंग हो सकती है अगर रिजोल्यूशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाता है तो। पब्लिक नोटिस एज वी आई हैव ऑलरेडी सेड कि विद इन 7 days एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी खुद देगी। ये एक नया इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। यहाँ पे क्रेडिटर्स को क्लेम्स फाइल करने के लिए कुछ टाइम मिलेगा, 21 दिन में फाइल करना है। क्रेडिटर्स की लिस्ट बनेगी, 30 दिन के अंदर आरपी को बनाना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो जो ये है कि आईबीसी था क्रेडिटर्स इन कंट्रोल। तो यहाँ पे जब रेजोल्यूशन प्रोसेस है इंडिविजुअल का, तो असेट्स अभी भी डेटर के पोजीशन में है, रीपेमेंट प्लान भी डेटर ही बनाएगा, इन कंसल्टेशन विद आरपी बनाएगा। बट रीपेमेंट प्लान क्योंकि ही हैज बेसिक नॉलेज, जैसे अगर मेरे अगेंस्ट में कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी हो रही है तो आई हैव बेटर नॉलेज रिगार्डिंग माय एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं क्लेम्स जो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, करंट बैलेंस शीट में, बट करंट बैलेंस शीट कभी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास होती नहीं है। हो सकता है 3 साल पहले ही अकाउंट एनपीए हो गया है, तो 3 साल पहले से, जैसे मेरा एक केस है जो 2015 से अकाउंट एनपीए था, अब 2015 से अकाउंट एनपीए था और हो सकता है 2013 से वो कंपनी भी नॉन फंक्शनिंग हो गई थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि
उसके बाद 2013 के बाद में किसी भी जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर था उसने कोई भी पेपर्स फाइल ही नहीं किए हैं, वेदर रिगार्डिंग गारंटर या स्टॉक स्टेटमेंट, कुछ भी फाइल नहीं था, कोई पेपर्स इन प्लेस थे ही नहीं। तो जब 2013 के डेटा अवेलेबल हैं, मैं एक एप्लीकेशन लगाती हूँ 2021 में, 2021 में एप्लीकेशन लगती है, बट क्योंकि मैंने इन्वोकेशन जो है वो अभी किया था, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने पर्सनल गारंटी अभी इन्वोक करी थी, तो लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है, 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, माई केस विल गेट एडमिटेड, केस एडमिट हो जाता है, बट रीपेमेंट प्लान बनाने के लिए मुझे आज की पोजीशन चाहिए, मेरे आज के एसेट्स क्या हैं, जो पर्सनल गारंटर है उसके आज के एसेट्स क्या है, उसके आज की बैलेंस शीट क्या है, उसके आज की लाइबिलिटीज क्या है, हर चीज सिक्योर्ड तो होती नहीं है, बिकॉज इट इज अ इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि सर अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारी एंट्रीज वाली केस भी हो सकती है, कहीं पे एंट्रीज ली हुई है, दी हुई है, जो कि बुक्स में दिख रही हैं, तो बुक्स में जो जो क्लेम्स दिख रहे हैं, ऑल दीज विल बी काउंटेड इन मेकिंग अ रीपेमेंट प्लान। ओनली 2 थिंग्स विच विल नॉट बी काउंटेड, जो हमने पहले से अभी हमने नॉलेज में लिए, एक्सक्लूडेड एसेट्स एंड एक्सक्लूडेड डेट्स, दीज विल बी मेंशन्ड एज अ, जैसे हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तो वो नीचे लिखे जाएंगे कि ये एक्सक्लूडेड डेट्स हैं, ये एक्सक्लूडेड एसेट्स हैं, जो कि रीपेमेंट प्लान में काउंट नहीं हुए। Otherwise, everything, a single asset I am having, which is not forming part as an excluded asset, will be part here. मेरे रीपेमेंट प्लान में एक तरफ असेट्स दिखेंगी, एक तरफ मेरी लाइबिलिटीज दिखेंगी, वेदर बी इट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। एक टर्म जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, दैट इज नो debt has been defined as a financial or operational, no creditor has been defined as a financial or operational। यहाँ पे वर्ड यूज्ड इज ओनली क्रेडिटर, तो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल भी हो सकते हैं। आफ्टर रीपेमेंट प्लान का जो भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा डिफाइंड है, उसमें टर्म्स होनी चाहिए रीपेमेंट प्लान की, कितना टाइम लगेगा। देखिए सर, किसी भी चीज को अगर हमने डेट जो है वो इंकर होते होते बहुत टाइम लगता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो डेट धीरे 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 इंकर हुई होगी, कॉर्पोरेट डेट है, ऑपरेशनल डेट है, होम बायर्स जैसे कि पिक्चर में होते हैं, गवर्नमेंट डेट है, और अदर टाइप की डेट है, वो सब होंगी, तो उनको रीपे करने के लिए भी एक रीपेमेंट प्लान बनेगा, एक टर्म बनेगी, 1 ईयर लग सकता है। जैसे कॉर्पोरेट डेटर ये कह सकता है कि ये मेरा रीपेमेंट प्लान है, इसके अंदर 1 साल में मैं ये एसेट को इस तरीके से क्रिस्टलाइज करूंगा, या वो ये भी कह सकता है कि आई ऑथोराइज आरपी टू रन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इन माय बिहाफ, आप रन कीजिए, आप रीपे कीजिए, इसको इतना रीपे होगा, इसमें से जो प्रॉफिट आएगा वो इसको पे होगा, इसको पे होगा, इस तरीके से। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, जैसे सरफेसी में होता था ना, एक सीडीआर होता था, एक ओटीएस होता था, तो कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती थी, वहां पे क्या होता था कि एक रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती थी कि ये जो डेट्स है उसको हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, फर्दर ये टाइम मिल रहा है आपको इन ऑर्डर टू रीपे योर डेट। तो दिस इज जस्ट लाइक अ रीस्ट्रक्चरिंग, जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इट इज जस्ट लाइक अ रीस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसकी पूरी डेट की, एंड हियर द डेट इज एवरीथिंग, जो भी ड्यूज है उसके, तो वो सारी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। उसमें एक मिनिमम सोर्स ऑफ फंड्स भी लिखेंगे हम कि कहाँ से पैसा आएगा, रीपेमेंट दिखाएंगे कहाँ पैसा जाएगा, कब कब कैसे पे होगा, एक मिनिमम बजट, कितने ड्यूरेशन में, क्या रीजनेबल एक्सपेंसेस पे होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल है, डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लिए वो लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, तो उनको भी पे करना होगा, तो मिनिमम एक्सपेंसेस वो भी होंगे जो एवरी टाइम पे होंगे। फिनेंसिंग, जैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कैसे फाइनेंस लेंगे, कौन से मिल सकता है, कैसे अरेंज हो सकता है। अगर डेटर ऑलरेडी बहुत टाइप ऑफ बिजनेसेस में है, तो हाउ विल दीज बिजनेसेस विल रन, बिजनेसेस रन होंगे, उनसे इस तरीके के प्रॉफिट्स आएंगे, ये इसके प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस जब कैरी आउट होंगे फिर इसको पे होगा, दिस फाइनेंशियल क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर विल बी पेड फर्स्ट, फिर कैसे फंड्स अप्लाई होंगे, किस तरीके से फंक्शंस कैरी आउट होंगे, कैसे कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कि ऑनरस होती हैं कि वो रियलाइज नहीं की जा सकती हैं, तो दीज विल बी डिफाइंड।
everything, every single asset, every single liability, everything would be defined here. प्लस उसके अंदर ये भी डिफाइंड होगा कि अगर कोई फाइनेंशियल या ऑपरेशनल या किसी भी टाइप का क्रेडिटर है, वो अगर ये एसेट लेने को तैयार हो जाता है, तो ये एसेट हम उनको एसेट सेल करके भी रियलाइज कर सकते हैं अमाउंट. ऑल दीज टर्म्स विल बी डिफाइंड. फिर उसके बाद में मीटिंग के लिए मीटिंग करनी है या नहीं करनी है. ये सारा जो डिसीजन होगा मीटिंग टू कैरी आउट और नॉट टू कैरी आउट, जैसे कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में द केस इज कि वहां पे मीटिंग्स होती ही हैं. जैसे सर ने ऑलरेडी कहा था कि आईआरपी 30 डेज के लिए बनता है, फर्स्ट मीटिंग करता है, फिर आरपी बनता है, फिर मीटिंग करता है. तो वहां पे जो सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनता है, उनकी मोस्ट प्रोबेबली एवरी मंथ मीटिंग होती ही है, एवरी 15 डेज मंथ. यहाँ पे मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स करनी है या नहीं करनी है, दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, बट विद द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग. मीटिंग हुई, रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड आफ्टर अप्रूवल और रिजेक्शन, in case it is approved, it will be binding on all type of creditors or debtors, and in case it is rejected, then all the whether debtor or creditor, they will be entitled to file for bankruptcy. और अगर यहाँ पे repayment plan successfully implement हो जाता है, तो discharge order will be carried out. I would invite any questions on the resolution process for this, or we should move forward. Hello. Yes. Yeah, ma'am, we can move on because till now no questions are received. Okay, sir. So we can do within 5 minutes. We can conclude our session, and after that 5 minutes we can take question answers. Right? Okay. Yeah, sure. Okay. These are some differentiations जो हम already discuss भी कर चुके हैं. Personal insolvency versus corporate insolvency. So under personal insolvency, there is no classification with respect to type of creditor, whether operational or financial. जबकि corporate insolvency में there is always, और आपने भी जैसे कि जो न्यूज में था होम बायर्स वाला जो केस था ज्योति इंफ्राटेक के अंदर, तो they were then categorized as other class of creditors, जहाँ पे कि क्योंकि होम बायर्स इतने होते हैं कि उन्हें डील करने के लिए भी अगर 1000 होम बायर्स भी हैं, तो उनके लिए एक अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हमको अपॉइंट करना पड़ता था. तो वहां पे क्लास ऑफ क्रेडिटर्स ऑलरेडी बीन डिफाइंड. यहाँ पे इन पर्सनल इंसॉल्वेंसी नो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैज बीन डिफाइंड. रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी जो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में, सिंस देयर आर क्रेडिटर्स इन कंट्रोल एंड डेटर्स पोजेशन इज नोवेयर, तो इट कैन बी डन ओनली बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वही रिप्लेस कर सकते हैं. बट इन पर्सनल इंसॉल्वेंसी इट कैन बी डन बाय डेटर और क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ दोनों का पोजेशन है. विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, दोनों जगह 90% कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स इज रिक्वायर्ड. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में देयर आर ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कि कंसेंट देते हैं, और पर्सनल इंसॉल्वेंसी में एवरी टाइप ऑफ क्रेडिटर्स. सीओसी जैसा कि मैंने टर्म डिफाइन किया था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो constitution of committee of creditors is mandatory under CIRP, that is corporate insolvency, and it shall comprise of financial creditors only. Only a single case जहाँ पे कि कोई financial creditor है ही नहीं, whether secured or unsecured, only in that case operational creditors will form part of COC. Otherwise COC consists of financial creditors only. जबकि पर्सनल इंसॉल्वेंसी में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सीओसी, ओनली आरपी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ जनरल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, एंड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में मैंडेटरी होती है, जैसे आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, but it is not mandatory and it will be conducted only if deemed necessary by resolution professional. Moratorium दोनों जगह है, yes, after admission of application.
but interim moratorium is not in place under corporate insolvency. तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग फीचर ये था कि इंटरिम मॉरिटोरियम इज इन प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. जैसे ही एनसीएलटी को आपने एप्लीकेशन की, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीड्स या कोई भी लीगल एक्शन कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल पर्सन. तो ये दीज प्रोविजंस आर देयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम कि कोई लीगल एक्शन में अगर वो नहीं पड़ेंगे तो दे विल बी इन अ better position to prepare a repayment plan and they can easily carry out the whole process. Preparation of plan, यहाँ पर debtor prepare करता है in consultation with RP, and there in corporate insolvency a prospective resolution applicant appears to prepare a resolution plan. तो जैसा कि सर ने ऑलरेडी कहा था कि चार्टेड अकाउंटेंट्स हैव अ अपॉर्चुनिटी हियर, बिकॉज जो resolution plan है, कोई जनरल लेमैन पर्सन कैन नॉट प्रिपेयर अ रेजोल्यूशन प्लान. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन ही होगा, कोई कॉर्पोरेट एंटिटी होगी जो कि फंड्स लाना चाहती है, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. बट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ रेजोल्यूशन प्लान सम प्रोफेशनल्स विल बी रिक्वायर्ड. तो जिसके लिए जैसे सर हैज ऑलरेडी स्टेटेड दैट 3 to 5% इज द फीस of amount of resolution debt to be given to professionals for preparing a resolution plan. So this is again a good opportunity for chartered accountants to carry out. यहाँ approval of plan के लिए 66% assent is required under corporate insolvency, and under personal insolvency 75% assent of all types of creditors present and voting. रिजेक्शन ऑफ प्लान होते ही कंपलसरी लिक्विडेशन हो जाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में, क्योंकि वहां पे प्लान अगर रेजोल्यूशन प्लान कैरी आउट नहीं हो पा रहा है तो. बट फॉर बैंकरप्सी यहाँ पे भी अंडर इंसॉल्वेंसी इट कैन बी फाइल्ड. सो आई वुड क्लोज हियर सर. दैट इज रोल ऑफ आईपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Thank you everyone, and any case, any questions regarding individual or personal or corporate insolvency, we would love to adhere to. Currently, ma'am, in inbox there is no question and answers. Okay sir. Manish bhai, we can go ahead with the vote of thanks. Your voice is not audible, sir. Yes, yes. Thank you, Pradeep ji and Vinita. Really, it was an eye-opener for us, and for me as a convener of this study circle, I've got lot of topics, because you said that these are the emerging area. So lot of topics we have got for our study circle. Yes, sir. Yes, that is an additional advantage we have got. Nitin bhai, I request you to unmute your this thing. Nitin bhai. Okay. So now I request, yeah. Thank you, Nitin bhai. I request our Manish Trivedi to propose a very hearty vote of thanks. Thank you so much, sir. Good evening, friends. Yeah, go ahead, Manish. I welcome all of you on behalf of Churchgate CP Study Circle. Friends, today we have various dignitaries of different eras on this present meeting on very short notice, and for that I thank you
Murtuza Kachwala for helping us in arranging the speaker at very short notice due to some unavoidable situation. And I thank you. I thank on behalf of Churchgate City Study Circle, CA Bhuta, CA IP Pradeep Kabra, CA IP Vinita Maheshwari to share their views and give guidance on how to reply scrutiny notice on show cause notice on service tax, and CA Pradeep Kabra has given a very nice presentation on bankruptcy IBC code, and CA Vinita has also explained the important provisions on the personal guarantees, which is very eye opener, and I'm sure that it will help all of us while guiding our client in IBC matters or any other loan or financial matters as far as personal guarantee is concerned. With this, I thank you all of you to participate in our seminar. Today we were having 59 participants, and with this, I once again propose a hearty vote of thanks. Thank you. Good night. Goodbye. Thank you, Manishji. Thank you so much. Yes, Thank you, and sir. I request all the three speakers to share their presentation to me so that we can share it to our members. Sure, sir. Definitely. Sure. We will, even that is a good idea.